So this question related to equilibrium was asked in JEE Main 2014. That is, among the following oxo acids, the correct decreasing order of acid strength is. तो हमें ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. We have to find the correct option. Okay. So these are the oxo acids of chlorine. That is HClO4, HClO3, HClO2 and HOCl. तो इनमें जो सेंट्रल क्लोरीन एटम है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे हम. जिसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी या ऑक्सीडेशन नंबर जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसकी एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. ओके. सो सबसे पहले HClO4 में देख लेते हैं हम. सो दिस विल बी 1. हाइड्रोजन की 1 है, क्लोरीन की x मान लेते हैं. -8 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स x इज इक्वल टू +7. ओके. HClO3 में दिस इज 1 प्लस x -6 इक्वल टू 0. That means x is equal to +5. HClO2 में it is 1 plus x minus 4 equal to 0. That means x will be equal to +3. HOCl में it is 1 minus 2 plus x equal to 0. That means x is equal to +1. So we can say that the highest oxidation number is in HClO4, then it is in HClO3, then HClO2, then HOCl. So our correct order of decreasing order of acid strength will be option number C. That is HClO4 is greater than HClO3 is greater than HClO2 is greater than HOCl. Okay, so that is the order of decreasing order of acid strength. Okay, and why it is so? Why this higher the oxidation number, higher the acid strength? The reason is जब हमारा central chlorine atom is present in the higher oxidation state, that means उसका further oxidize होने का tendency कम होगा. That means उसका reduce होने का tendency ज़्यादा होगा. And we know that these Lewis acids are the electron pair acceptors. So जितना उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उतना ही इट विल बी ए स्ट्रॉन्गर Lewis acid. So we can say that higher the oxidation number of the central atom, higher will be the acid strength. Thank you and wish you all the best.